So welcome to the class students once again. And yes, today also we are going to discuss about the cell structure. है ना, हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में आज की क्लास में भी पढ़ेंगे. इसके पहले की क्लास में भी हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ा था. Yes, in the previous class also we have started with the cell structure, and we have started or we have done the first part of it. That was what? That is the plasma membrane. है ना. If I am talking about the structure of cell, if this is a cell, for example, so what we have seen that this outer membrane, yes, or the outer cover of the cell is nothing but plasma membrane. ये हमने पढ़ा in the last class. Yes, so plasma membrane is the outermost covering of the cell. What it separates? It separates the inner content of the cell. Cell के अंदर की चीजों को वो separate रखता है from the external environment. Isn't it? This plasma membrane, we know it is elastic, it is living, it is thin, as well as it is semi-permeable membrane. Semi-permeable का मतलब भी मैंने बताया था, and also selectively semi-permeable. That means it is allowing only some selected substances, molecules to pass through it. यानी कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही सेल के अंदर और बाहर आना जाना कर सकती है. द मेम्ब्रेन इज लाइक दैट, है ना. थोड़ा सा देयर विल बी पोर्स ऑल्सो विच अलाउज वेरी माइन्यूट पोर्स विच कैन अलाउ ऑल दिस सब्सटेंसेस टू गो इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये किस तरह से होता है? एंट्री और एग्जिट, ये भी हमने पढ़ा था कि इट इज डन बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, बाय सम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, isn't it? या फिर एंडोसाइटोसिस. ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. इसके अलावा हमने देखा था कि यदि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल हैज सम एक्स्ट्रा कवरिंग अदर देन दिस सेल मेम्ब्रेन, और वो जिसको बोलते हैं सेल वॉल. Isn't it? But this cell wall is present only in a plant cell. Cell wall का काम क्या था? It is non-living part. It is made up of cellulose there, where the plasma membrane we have seen that वो किससे बनता है? उसमें there is a role of your proteins, carbohydrates, isn't it? Cholesterol, isn't it? So और उसमें सबसे important था आपका phospholipid. Yeah, but in this case cell wall, the cellulose is the main part. It is made up of cellulose. Cell wall क्यों जरूरी होता है plants को? Because cell wall it provides a rigidity to the cell. Got? And also it provides the mechanical support. प्लांट है, प्लांट सेल्स जो है, प्लांट है, इट इज नॉट मूवेबल ना, वो एक ही जगह रहेगा. इट हैज टू फेस ऑल द environmental hazards also, कुछ climatic changes हो रहे हैं, so everything it has to face. तो वो survive करने के लिए वो सेल को और ज़्यादा tough होना रहेगा. And that's why the plant cells, they have the outermost covering which provides the rigidity which is called as the cell wall. So these two things we have already discussed. आज हम पढ़ने वाले हैं इस सेल के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. So in today's class we are going to discuss about this nucleus, okay? And this the thing between this plasma membrane and nucleus, यहाँ पे जो fluid रहता है जिसको बोलते हैं cytoplasm. So we are going to discuss about these two components of a cell, that is the nucleus as well as cytoplasm in today's class, okay? So come on, we'll start with the class there. If I start or if I talk about the nucleus students, nucleus cell का एक बहुत ही important part है, ठीक है? वो सेल में mostly centrally located रहता है, which is spherical in shape also. न्यूक्लियस में भी दो लेयर्स होते हैं. यस, देयर इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर विच हैज सम पोर्स ऑन इट. और वो जो दो लेयर है, डबल लेयर कवरिंग जो न्यूक्लियस की रहती है, दैट मीन्स द कवरिंग विच सराउंड्स दैट न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, उसी तरह से न्यूक्लियस की जो कवरिंग है विच इज डबल लेयर्ड अगेन, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन.
यस, इन्हें बाहर की रहेगी वो आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की रहेगी वो इनर मेम्ब्रेन. अब ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों मिला के, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक साथ मिला लिए, तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप. क्लियर? And as I told you that the nuclear membrane has pores on it. क्यों रहेंगे pores? Small pores are there so that the important necessary substances can go in and come out. ठीक है, न्यूक्लियस से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें साइटोप्लाज्म में भेजनी है, तो उसके लिए क्या है, मेम्ब्रेन के ऊपर देर आर सम पोर्स थ्रू विच द सब्सटेंस कैन मूव आउट एंड इन. आई थिंक दिस इज क्लियर. Yeah, so this is about the nucleus. Now you can see here, this is what we call as a nucleus. इस तरह से ये न्यूक्लियस होता है जो कि सेल के सेंटर में रहता है. You can see this. Yes, so this is a nucleus. ये जो आपको दिख रहा है ये डबल लेयर्ड है, ये एक बाहर का और एक ये अंदर का. यस, आउटसाइड, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसको मिला लिया दोनों मेम्ब्रेन को, तो हम इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर एनवेलोप. और ये मेम्ब्रेन्स आउटर और इनर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ यू कैन सी हियर, ये जो बीच बीच में गैप दिख रही है, इट इज नथिंग बट द न्यूक्लियर पोर्स. ये पोर्स के थ्रू सब्सटेंसेस बाहर जाने का काम करते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है. आई होप दिस इज क्लियर. अब ये जो पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर का, दैट मीन्स द पार्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म. गॉट इट? So nuclear membrane, we can say that it is filled with dense nucleoplasm. जैसे मैंने बोला कि सेल में रहता है, सेल के अंदर रहता है साइटोप्लाज्म, isn't it? उसी तरह न्यूक्लियस में जो डेंस फ्लूइड रहेगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है. Now within this nucleoplasm, students, there will be a nucleolus as well as the chromatin fibers. समझ में आ रहा है? और ये जो दिख रहा है ना, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अबाउट दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. दिस इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेली. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक साइड, यस, वो अटैच्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. क्लियर? सो व्हाट आई टोल्ड यू दैट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म व्हाट इज देयर? यस, द न्यूक्लियो, विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म there is what? Nucleolus and chromatin material. I hope this is clear, isn't it? अब ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस या तो एक होगा न्यूक्लियस में या एक से ज्यादा होगा, लेकिन there will be at least one nucleolus is going to be there. Clear? So it can be one or more than one, but at least one will be there. Okay. जो न्यूक्लियोलस है, it is rich in students protein, yes, and RNA molecule, that is ribonucleic acid molecule. और न्यूक्लियोलस को ही हम बोलते हैं, we called it as a factory of ribosome. What we called it? We called the nucleolus as a factory of ribosome. क्यों factory of ribosomes? Actually ये जो ribosomes है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यस, ये आपको कहाँ मिलेगी? न्यूक्लियोलस. इट विल बी द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. क्लियर? एज राइबोसोम्स आर हेल्पफुल इन द प्रोटीन सिंथेसिस, सो हम बोल सकते हैं बाय दिस दैट द न्यूक्लियोलस ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. न्यूक्लियोलस भी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है. हाउ?
इफ समवन आस्क यू कि किस तरह से न्यूक्लियोलस प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, सो वी कैन से दैट it is rich in actually protein, and RNA as also what is there? Yes, it is called as a factory of ribosome, and these ribosomes are helpful in protein synthesis. Clear? अब नेक्स्ट है आपका क्रोमैटिन मटेरियल, जिसको आप देख रहे हो यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यस, इंटरमिंगल्ड है इस तरह से. So this thread-like structure which is present inside the nucleoplasm, इसको हम बोलते हैं chromatin. Yes, so these are the thread-like structure in the nucleoplasm. And this thread-like structures are composed of what? किससे बनते हैं? वो बनता है proteins and DNA, genetic substance है जिसको बोलेंगे DNA. Got it? So you can see here, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका DNA, yes, deoxyribonucleic acid, और ये हिस्टोन है. हिस्टोन इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन. यस, ये प्रोटीन का नाम है. ये मिल जाएंगे टुगेदर, दे विल फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म दिस क्रोमैटिन. ये क्रोमैटिन आपको थिन फाइबर्स दिख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. नाउ ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दिस थ्रेड लाइक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दे स्टार्ट टू कंडेंस होना शुरू करेंगे, पास आना शुरू करेंगे. यस, and then because of the condensation what they will form? They form such structure, थोड़ा सा thick structure बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं chromosome. So during the cell division, chromatin is condensed into two or more thick ribbon-like structure, and that we called as a chromosome. So समझ में आया क्रोमोसोम किस तरह से होता है? That's why we can say in the nucleus the chromosome is there. तो क्रोमोसोम कहाँ से आया? क्रोमोसोम is again the condensed form of a chromatin. और ये क्रोमोसोम कब बन रहा है? During the cell division, and that's why these chromosomes, which are the thread-like structure, they are visible only during cell division. क्यों सिर्फ cell division के समय दिखेंगे? Because they are formed then only. उसी समय में, सेल डिवीजन के समय में भी क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस्ड होते हैं और क्रोमोसोम बनता है, और ये क्रोमोसोम हमको सेल डिवीजन के समय में ही दिखता है. दैट इज द रीजन. गॉट इट? नाउ दिस क्रोमोसोम कंटेन्स व्हाट? वी नो दैट दिस क्रोमोसोम कंटेन्स व्हाट? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ अ सेल, isn't it? It contains hereditary information of a cell, and that information, it is there in a form of genes. आपने सुना होगा ना कि this is there in my genes, it is not there in my genes. So what is genes? Genes are the things which are present on the chromosomes. ठीक है, और ये genes is specifically responsible for the transfer of the characters. I hope this is clear. Yes students, so I can say that this chromosomes, अब जैसे मैंने बताया कि क्रोमोसोम्स किससे बन रहा है? इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. क्रोमैटिन कैसे बना था? बाय द डीएनए एंड द प्रोटीन हिस्टोन, isn't it? So we can say that the chromosomes are also made up of DNA and the protein. Clear? Now if I talk about the genes, genes कैसे बन रहे हैं? genes भी डीएनए से ही बनेगा, क्योंकि वो एक पार्ट है क्रोमोसोम का. क्रोमोसोम में जो रहता है, यू कैन सी दैट. देखो, दिस इज अ क्रोमोसोम स्टूडेंट्स, दिस इज अनड्यूप्लिकेटेड क्रोमोसोम, यानी जिसमें ड्यूप्लीकेशन नहीं हुआ है, सिंगल क्रोमोसोम. जब बाद में वो ड्यूप्लीकेट होता है तो एक से दो एक जैसे क्रोमोसोम बन जाते हैं, जिसको हम होमोलॉगस बोलते हैं. ठीक है, क्रोमोसोम में दो आर्म्स रहते हैं. ये ऊपर का आर्म जो है ये है शॉर्ट,
तो हम इसको बोलेंगे शॉर्ट आर्म। ये नीचे का आर्म रहता है लॉन्ग, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग आर्म। और इसके बीच में ये जो रहता है, जो दोनों आर्म के बीच में रहता है ये स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोमियर। और ये दोनों आर्म्स को बाद में बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम पे आप देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर द डिफरेंट जीन्स विच आर प्रेजेंट। अलग अलग चीजों के अलग अलग जीन्स रहते हैं, एंड दिस जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जब ये क्रोमोसोम के थ्रू ये जीन्स ट्रांसफर होता है ना फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, दैट कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड। यदि जीन्स में कुछ डिफेक्ट आ गया या सो वो कैरेक्टर दिखाने वाला, वो चीज दिखाने वाला जीन यदि नहीं है, तो वो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में एब्सेंट रहेगा। So that's why we can say that genes are also made up of DNA and the protein. Yes, and we can say that the distinct segment of DNA are nothing but the genes. ठीक है, अब ये डीएनए क्या करता है? डीएनए इट स्टोर्स ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू फंक्शन। सेल को क्या क्या काम करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करके रखता है? इट इज डन बाय द डीएनए, है ना। सेल का ग्रोथ कैसे होगा? द ग्रोथ ऑफ अ सेल, द रिप्रोडक्शन ऑफ अ सेल, व्हाट आर द फंक्शंस द सेल हैज टू प्रोवाइड, सो सेल हैज टू परफॉर्म टू ग्रो देयर, है ना। वो सारे चीजें कौन ध्यान रखेगा? इट इज डन बाय द डीएनए। यस, वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर रहेगी। यहां तक सभी को समझ में आया? नाउ वन मोर थिंग अबाउट द क्रोमोसोम, जैसे मैंने कहा कि द क्रोमोसोम इज देयर एंड इन एवरी इंडिविजुअल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डेफिनेट इन ईच स्पीशीज, आई कैन से। जैसे if we talk about the humans, yeah, human cells, it has 46 chromosomes, जिसको हम 23 pairs भी बोलते हैं। It is fixed in all the human species. I will have 46 chromosome, you will have 46 chromosome. All the human species, they are going to have 46 chromosome. This is a normal chromosome. बाद में abnormality में कम ज़्यादा होगा, वो that is a different thing. But in a normal case, all human cell will have 46 chromosomes or 23 pairs of chromosomes. Clear? Like as I told you that the human have 46. Yes, we can write here human cell have 46. Then यदि मैं lion tiger की बात करूँ, lion, tiger, the family also have cat, house cat. Yes, it has 38 chromosomes. उसी तरह से if I talk about the dog, dog will have 78 chromosomes. Then monkey, monkey also have, it has 54 chromosomes. Plant की बात करें तो potato cell, potato cell you can see it will have 48 chromosomes. Wheat cell, wheat cell के पास रहता है 42 chromosomes. So you can see that all the number of chromosome is definite in all the each species there. Lion की जितनी भी species रहेंगे सभी में 38 ही रहेगा. Monkey की जितनी भी species रहेंगी it will have 54. Now, but remember students, an important point I am just telling you, that the number of chromosomes do not determine the characters. Yes, जो characteristics रहेगी species की, वो ये number of chromosomes जो है वो determine नहीं करेंगे. यदि वो determine करते तो जैसे हम बोल रहे हैं कि सारे human के पास 46 chromosomes है, so chromosome same है, तो सारे characters same होने चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी है क्या? We all look different, na? We are not a carbon copy. Why this is like that? That means the chromosomes do not determine the characteristics of a species. Then who determines the characteristics of a species? It is a gene.
Yes, the genes which are present on a chromosome, it determines the characteristics. ठीक है, ये पूरा एक्चुअली जेनेटिक्स आ जाता है. इफ यू गो, it is a very interesting topic there, but for you, for now, this much is enough, I think so. आपको इतना जानना जरूरी था और इतना इनफ है अभी के लिए. ये आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग है यदि आप डीप में जाओगे. जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे, you will get to know everything. But remember that the characteristics of a species are not determined by the chromosome, but it is determined by the genes which are present on the chromosomes. And that's why, as I told you, that the lion, tiger, cat, for example, हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, हाउस कैट, इन सभी के पास तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, बट दे लुक डिफरेंट. वी कैन आइडेंटिफाई द लायन, वी कैन आइडेंटिफाई द हाउस कैट, है ना, वो सारे अलग अलग दिख रहे हैं. Why? Because their characteristics is determined by the genes, and the genes are different. अलग अलग हो सकते हैं genes. That's why. Clear? So this you should remember, students. So by this I can say that the nucleus is definitely what? The most important part of a cell. Why? Because the nucleus controls all the metabolic activities of a cell. है ना, like metabolic activities बोला, that means it plays a central role in cellular reproduction. सेल का रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस प्ले करता है, isn't it? जो सेल डिवाइड होता है ना, सो व्हेन द न्यूक्लियस आल्सो डिवाइड्स, उसके दो पार्ट हो गए, एक सेल में जाएगा दूसरे में ऐसे जाएगा, इन दैट वे. सो ईच सेल विल हैव अगेन द न्यूक्लियस, so it plays a very central role in the cellular reproduction, by which the cell divides and it forms from one cell you get two new cells. Also the cell or nucleus determines the way the cell will develop. cell किस तरह से काम करेगा, कैसा बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? It is decided by the nucleus. That's why we can say that it controls all the metabolic activities of a cell. Similarly, it regulates the cell cycle. Then it is concerned with the transmission of hereditary characters, because it has what? Chromosomes, and the chromosomes have genes, isn't it? So parents से offspring में जब characters transmit करना है, it is due to this chromosome which is present in a nucleus. As nucleus is very important for all of us students, we can say that if nucleus is removed from the cell, cell में से nucleus को निकाल दिया जाएगा, तो वो सेल ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा. द सेल विल डाई, बिकॉज देयर इज नो वन टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल. कौन डिसीजन लेगा? कोई नहीं. So how the cell can work? It will not work, and the cell can, or cell will die. So that's why the nucleus is very important. But now one more important thing that you should remember, कि कुछ सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. So which are the cell who do not have the nucleus? One such cell is, students, RBC, red blood cells, or the red blood corpuscles of human. They do not have the nucleus. उसमें भी specifically, if I want to say, I will say matured RBC lacks the nucleus. जब ये RBC मैच्योर होता है ना, वो प्रोसेस में वो न्यूक्लियस को लॉस्ट कर देता है, न्यूक्लियस को बाहर निकाल देता है. उसी के साथ साथ जो दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज है उन सबको भी बाहर निकाल देता है. सो दिस इज अ सेल विच इज विदाउट द न्यूक्लियस. क्यों बाहर निकाल देता है? नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीसी? वी नो दैट द आरबीसी इज यूजफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन. उसमें हीमोग्लोबिन रहता है आरबीसीज में, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? इट कैरीज द ऑक्सीजन. एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर जाता है. Am I right? Yeah.
and in that way the transportation of oxygen takes place with the help of hemoglobin which is present in an आरबीसी. अब वो हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा रहेगा सेल में उतना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी हो पाएगा. तो हीमोग्लोबिन को रहने के लिए स्पेस चाहिए. यदि सेल में न्यूक्लियस रहेगा, दूसरे ऑर्गेनेल्स रहेंगे तो सेल में स्पेस कम हो जाएगी. या to make a more space available so that more Hb, more hemoglobin could carry more oxygen with it for the transportation. The RBCs, or specifically the matured RBCs, do not have the nucleus and the other organelles. Now, there could be a question in your mind, ma'am, if RBCs do not have nucleus and you told that if nucleus is not there the cell will die, then how the RBC works? Yeah, actually students, the lifespan of the RBCs of a human is only 120 days. 120 दिन में तो वो RBC cell die कर देता है. It will die off. Yes, वो इतना दिन जो भी जीता है ना, it is due to the anaerobic respiration. वो aerobic respiration perform नहीं करेगा because it will not have the components. It performs anaerobic respiration. And what I told you that the matured RBC के पास नहीं रहेगा. लेकिन जब वो RBC डेवलप हो रहा है, मैच्योर होने से पहले उसके पास न्यूक्लियस भी रहेंगे, सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहेगा, तो इट विल फंक्शन वेरी इफेक्टिवली. ओके, तो क्या होता है जब न्यूक्लियस वगैरह रहता है ना, so this we know that the matured RBC will not synthesize new hemoglobin, new proteins. ऐसा कुछ भी नहीं बना पाएगा, वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, एनर्जी इन्हें कुछ भी नहीं बना पाएगा क्योंकि उसके पास ऑर्गेनेल्स नहीं है. तो वो क्या करता है, it keeps ready its store for the enzymes and proteins. उसको जो जो प्रोटीन्स जो जो एंजाइम्स की जरूरत रहेगी बाद में, वो सारों को स्टोर करके रखता है. Yes, on that basis it can survive for few days. इसके साथ साथ एक और ड्रॉबैक है, यदि न्यूक्लियस नहीं है तो इफ द सेल नीड सम रिपेयरमेंट, कुछ रिपेयर करने की जरूरत रही, तो दैट रिपेयर कैपेबिलिटी is also limited in this RBC because it do not have the nucleus. I hope this is clear. Yeah. So यदि आपको पूछा जाता है तो आप ये आंसर दोगे. और सिमिलरली प्लांट सेल में यदि हम बात करें ना, तो फ्लोएम आपने पढ़ा होगा, द कंडक्टिंग सिस्टम. यस, सो द फ्लोएम में जो सीव ट्यूब है, द फ्लोएम सीव ट्यूब, ये भी क्या करता है, इट लूजेस मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स एंड द न्यूक्लियस. क्यों? क्योंकि अगेन ये फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, इजंट इट? सो न्यूक्लियस रिमूव कर देने से, ऑर्गेनेल्स रिमूव कर देने से, इट मेक्स इजी for the materials to flow through it for the transportation. Again space बढ़ जाएगी और ज़्यादा material flow करेगा. I hope this is clear. So these are the cells that do not have nucleus, but yes, they can again survive and they also do some functions. I hope this is clear, students. Now, इसी के basis पे कुछ organisms रहते हैं जैसे बैक्टीरिया. Yes, organisms like bacteria, students, in that cases the nuclear region जो रहेगा वो properly defined नहीं रहता है, properly दिखता नहीं है क्योंकि उसमें nuclear membrane नहीं है. बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं दिखेगी, तो मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी तो वो अलग से न्यूक्लियस आपको डिफाइन नहीं कर पाएगा, है ना. तो ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो रहेगा जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड आपको दिखेगा, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड. और ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियर रीजन नहीं रहता है, यस, ओनली द न्यूक्लियोइड इज देयर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. दैट मीन्स दिस ऑर्गेनिजम्स दे लैक द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है.
जबकि जो ऑर्गेनिजम्स के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इजीली दिखता है, इट इज कॉल्ड एज ए यूकैरियोट्स। तो इसी के बेसिस पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंशिएशन भी पूछा जा सकता है आपको। सो यू कैन सी हियर दैट द प्रोकैरियोटिक सेल जो है, यस दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो प्रोकैरियोट्स में हम बोल सकते हैं, जैसे आप बोल दो बैक्टीरिया, है ना, देन देर आर सम ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं प्रोकैरियोट्स के। सो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, 1 to 10 micrometer only, whereas the eukaryotic cell can be large, 5 से 100 micrometer तक भी हो सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा, जिसको डिफाइन कौन कर रहा है, कवरिंग, आउटर कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, लेकिन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन रहेगा, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। Again, prokaryotic cell, it has only single chromosome, whereas a eukaryotic cell will have more than one chromosomes. Then the ribosomes are present, or the small ribosomes are there in the prokaryotes, and the eukaryotes will have large ribosomes. Ribosomes, I told you, it is responsible for protein synthesis. Then other cell organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi, all these are absent in prokaryotic cell. Whereas a eukaryotic cell, they have all the organelles. Yeah, so eukaryotic cell के example हम ले सकते हैं all the plant cells, yes, animal cells, फिर जैसे अमीबा बोला, इस तरह के you can take the examples which are for the eukaryotes. I hope this is very simple, the difference between the prokaryotes and the eukaryotes. So this was about the nucleus, students. Now in another part of a cell, that is the cytoplasm. Cytoplasm क्या है? Cytoplasm is a fluid contained inside the plasma membrane. Plasma membrane के अंदर जो fluid part रहेगा, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का आउटर कवरिंग, ये बीच में आपने देखा, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, यस, ये सारा जो पार्ट है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का, जिसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। यस, ये साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, ये सारा, ये तो सारे ऑर्गेनेलीज है। ये ऑर्गेनेलीज किस में तैर रहे हैं? देयर इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म. So it occupies, cytoplasm occupies most of the part of the cell within the plasma membrane. सबसे ज्यादा पार्ट सेल का कौन ऑक्यूपाई करेगा? ये साइटोप्लाज्म. यदि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जस्ट अ मिनट, yes, when we observe under the compound microscope, what we can see there, we can see that this cytoplasm appears colorless, students. Yes, watery and partly transparent. इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है. अब ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज रहते हैं. यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर like ribosomes, Golgi body, vacuole, endoplasmic reticulum, mitochondria, then lysosome. Yes, these all are called as cell organelles. So this specialized cell organelles are present in the cytoplasm. ये हर एक organelles अलग अलग function perform करती है. It has, all of them has a specific function. ठीक है, like the mitochondria, we know mitochondria is called as a power house of a cell. वो सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है. दिस ऑल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो दिस सेल ऑर्गेनेलीज, दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शंस. सो इन ऑल व्हाट द फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म हम बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म, इट इज अ साइट फॉर मेनी मेटाबॉलिक पाथवेज like glycolysis,
फैटी एसिड सिंथेसिस, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, ये सारी चीजें क्या होती है साइटोप्लाज्म में. ठीक है. साइटोप्लाज्म ऑल्सो हैव अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स, इंपॉर्टेंट केमिकल्स स्टोर करके रखता है, जैसे कि आई कैन से अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, विटामिन है, ऑल दीज आर स्टोर्ड देयर इन द cytoplasm also. Okay. Living cytoplasm is always in a state of some movement. यानी ये move करते रहता है. It is not fixed. It is a fluid, ना watery content. So it is always in a state of movement. Got it? So this is about the cytoplasm. More about the cytoplasm, we have to learn about the cell organelles. But for the cell organelles, we are going to discuss that in the next class. Now after the cytoplasm, a very small part which I wanted to take, that is what is a protoplasm. तो प्रोटोप्लाज्म को बहुत ही सिंपल वे में यदि समझना है तो आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को आप मिला लो तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म. Yes, so what is protoplasm, students? We can say that it is living cell substance in an organism. Yes, it is a living cell substance. You can see, यदि आपने न्यूक्लियस ले लिया और ये साइटोप्लाज्म को कंबाइन कर लिया तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी पार्ट है पूरा, इट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. सो व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ दिस प्रोटोप्लाज्म? इफ आई वांट टू सी द केमिकल कंपोजिशन, वी कैन से दैट इट वेरीज, वो अलग अलग चेंज होता रहेगा फ्रॉम सेल टू सेल. बट द कॉमन एलिमेंट्स, सभी में जो कॉमन एलिमेंट्स हो गए इसमें ऑफ दिस प्रोटोप्लाज्म, वो क्या है? लाइक इट इज कार्बन, देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन. ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स विच विल बी प्रेजेंट एज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म. अब ये कौन से फॉर्म में मिलेंगे? दिस कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ फैट्स, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, मिनरल्स, isn't it, कार्बोहाइड्रेट्स. ये सारे फॉर्म्स में आपको ये केमिकल कंपोजिशन जो है आपको ये सारी चीजें मिल सकेगी. So we can say that the protoplasm is a living matter. The total substance of a living cell, that is the cytoplasm and the nucleus. In a very short way, we can say that this is what is called as a protoplasm. Okay? So this is what we have learned today's class about the nucleus. हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा. न्यूक्लियस में हमने देखा कि न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलोप भी बोलेंगे. देन न्यूक्लियोप्लाज्म में देयर विल बी व्हाट, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोलस रहेगा. न्यूक्लियोलस के साथ साथ क्रोमैटिन फाइबर्स भी रहेगा, है ना. न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन होता है, इट इज वन ऑफ द फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ऑल्सो कॉल्ड एज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस फॉर्म में जो बन जाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स में जीन रहता है, एंड ऑल दीज कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, है ना. तो जेनेटिक और द हेरिडिटरी जो चेंज आएगी, इट इज बिकॉज ऑफ दिस genes present on the chromosomes. Yeah, after that we have discussed about the cytoplasm. We have seen its content, we have seen the different organelles which are present in the cytoplasm, and then we have discussed about the protoplasm. So all these things we have discussed in today's class, students. I hope this is very much clear. In the next class we will start with the cell organelles, जिसमें हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स,
राइबोसोम्स, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. Got it? So I am stopping here. We'll see you in the next class. Thank you, students. If you like the class, you can share this with your friends. You can go with the like button, and also if you have not subscribed the channel, you can subscribe it so that you can get a proper notification whenever the different classes are added. Okay. Also, you can download the Arth Academy app. In this app, you are going to get the topic wise videos of the lecture of the lesson, as well as the detailed notes, question answers, and the practice session will also be conducted there. Okay, so the link of the Arth Academy is also given in the description box, or in this slide also you will get the link. So once again, thank you, students. Keep learning till we meet in the next class. All the best for your studies, and this is the link of the Arth Academy app. You will also get in the description box. So please take care. Bye. See you all in the next class. Till then, take care, students. Bye bye.